દાહોદ જિલ્લા દ્વારા લોકસભાની ચૂંટણીમાં પત્રકારોને અન્યાયને લઈ જિલ્લા કલેક્ટરને આજરોજ આવેદન આપ્યું. ગુજરાત રાજ્ય પત્રકાર એકતા પરિષદ દાહોદ જિલ્લા દ્વારા લોકસભાની ચૂંટણીમાં સાથે થયેલા અન્યાયને લઈને દાહોદ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન આપવામાં આવ્યું. લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદાનના દિવસે તેમજ મતગણતરીના દિવસે અપાતા એન્ટ્રી પાસ બાબતે આ વખતે તંત્ર દ્વારા યુટ્યુબ ચેનલના પત્રકારોનો રિપોર્ટરો સાથે અન્યાયના લીધે પત્રકારોમાં જે રોષની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે તેમજ તંત્ર પ્રત્યે એક ધિક્કારની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે, જેને લઈને આજરોજ ગુજરાત રાજ્ય પત્રકાર એકતા પરિષદના નેજા હેઠળ દાહોદ જિલ્લા પત્રકાર એકતા પરિષદ દ્વારા નિવાસી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જણાવ્યા મુજબ હાલના તબક્કે નાના પત્રકારોને સરકારી તથા રાજકીય કાર્યક્રમનું તમામ કવરેજ કરી તમામ વિસ્તારમાં પ્રસારણ કરીએ છીએ અને ચાલુ વર્ષ દરમિયાન યોજવા જઈ રહેલ છે. ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીના તંત્ર દ્વારા સાંજ સુધીમાં પાસ ઇસ્યુ કરવામાં આવે જો નહીં અને કરવામાં આવે તો સરકારી તંત્રો તેમજ શાસક પક્ષનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. સરકારી તંત્ર શાસક પક્ષના તમામ કાર્યક્રમને કવરેજ નહીં કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. આ અંગે ગુજરાત રાજ્ય પત્રકાર એકતા પરિષદના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પ્રિતેશભાઈ પંચાલે જણાવ્યું હતું કે ચાલુ વર્ષે યોજાવા જઈ રહેલ લોકસભાની ચૂંટણીમાં તંત્ર દ્વારા કોના ઇશારે નાના પત્રકારોને ચૂંટણી કવરેજ પાસ ઇસ્યુ કરવામાં નથી આવ્યા. જો એક પત્રકારના કારણે જો તમામ પત્રકારોને સજા કરવામાં આવે તો કેટલા અંશે યોગ્ય ગણાય? તો સથવારો જો આજ સાંજ સુધીમાં પાસ ઇસ્યુ કરવામાં નથી આવ્યા તો હવે પછી શાસક પક્ષ સરકારી कार्यक्रमનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. બ્યુરો રિपोर्ट चंदूभाई मोहनिया दाहोद. साथियों नमस्कार. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 7 तारीख के रोज़ चुनाव है और चुनावी माहौल हमारे दाहोद के अंदर है, पूरे देश भर में चल रहा है. तो सभी पत्रकार बंधु जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि हमको यहाँ से कार्ड बनकर नहीं दिया गया है, ताकि उस कार्ड के माध्यम से हमारी भी इच्छा थी, हम भी चाहते थे कि हम भी गांव-गांव जाएं, कवरेज करें. हालांकि हम कवरेज करने के लिए तो जा सकते हैं, परंतु जो चीज़ हमें और भी कवरेज करना था वो हक और अधिकार हमारे पास अभी नहीं है. इसके विषय में हमारे जो कि गुजरात पत्रकार एकता परिषद के दाहोद जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है, वही आपको सारी जानकारी देंगे कि क्यों हमारा कार्ड नहीं बने. हालांकि जो पहले ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे 4 फोटो वो भी हमने दिए. इसके बाद जो हमारे कि भाई जो भी तुम्हारे तंत्री हो, जो एडिटर है, जो इंचार्ज है, जो भी आपके चैनल के उनके दिए. मैं खुद आरजे भारत न्यूज़ 7 का ओनर हूँ. मैंने भी अपने पत्रकारों को यहाँ जमा किया है और लीड इंडिया एसोसिएशन के साथ हमारी फ्रेंचाइजी है. सब अलग अलग चैनल के भाई यहाँ मौजूद है. तो उसके बाद हमें जानकारी दी गई, एक लिंक आई कि भाई लिंक के अंदर आप क्लिक करें और खुद यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरें. वो भी हमने भर दी, डिटेल्स भरी हमारे द्वारा. उसके बावजूद भी हमारे कार्ड नहीं आए. तो हमारे मन में बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे कार्ड क्यों नहीं आए. हालांकि हम कह नहीं सकते कि क्यों नहीं आए, पर हम इतना कहेंगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, ये हम सबको लग रहा है. भाई सही है ना? हमको ऐसा लग रहा है, हमारे सभी भाइयों को लग रहा है. तो अब हमारे जो प्रमुख है वो बताएंगे कि क्या है हकीकत और क्या सच्चाई है. क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कौन सा कार्ड, एक्रीडेशन जो कार्ड है, जिन के एक्रीडेशन कार्ड थे केवल उन्हीं के कार्ड आए. तो मेरा सवाल ये है कि दाहोद जिले में कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके एक्रीडेशन कार्ड है, उनकी भी तपास होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए. ये सत्य और हकीकत बात मैं कहना चाहता हूँ. क्योंकि हम लोग कहते हैं आप यूट्यूबर हो, भैया हम छोटे पत्रकार हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो गांव-गांव हम जाते हैं और सत्य हकीकत दिखाने की कोशिश हम करते हैं. तो इस समय हमारे प्रमुख यहाँ खड़े हैं गुजरात एकता परिषद के. आइए उनसे हम वो बताएंगे. सर बताइए. दाहोद जिला पत्रकार एकता परिषद जिला प्रमुख योगेश भाई चौहान जे कायना माहिती अधिकारी जे एम कहे छे कि दाहोद जिल्लानी अंदर एक्रेडिशन कार्ड 6 થી 7 જણાના જ છે. તો આ લોકોના 78 જણાના કેવી રીતના જે ચૂંટણી કાર્ડ કેવી રીતના નીકળે છે અને એમ છે કે બધા આગળથી આવેલા વ્યક્તિ છે એમના નીકળેલા છે. આ શું ભેદભાવ નથી? તો ત્યારે શું છે? આ એક તરફી જ હકીકતે ચૂંટણી કાર્ડ નીકળી રહ્યા છે. चूंटनी पास निकली रहा है. हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज हमें बहुत दुख हो रहा है. कहीं ना कहीं हमारे भी हक अधिकारों का खनन हो रहा है, ये हमें लग रहा है. तो हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा किसी भी पत्रकार भाई बंधु के साथ नहीं होना चाहिए. कोई किसी
हम क्योंकि कोई जाति धर्म भेदभाव या भाषा का भेदभाव ना रखते हुए हमें पत्रकारिता की गरिमा रखते हुए हम पत्रकारिता हमें करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन है वो सब के लिए होना चाहिए। उसमें ये चाहे वो बोले सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे टीवी चैनल वाले, तो मैं टीवी चैनल वाले भाइयों से भी मैं उनको कहता हूँ कि गांव-गांव तो ये हम छोटे पत्रकार जाते हैं, तो हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। सरकार से यही हम गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं राजेश सिसोदिया, आरजे भारत न्यूज़ 7 का एडिटर इन चीफ। धन्यवाद। चौहान योगेश बी, दाहोद जिला पत्रकार एकता परिषद जिला प्रमुख।